So let us start the today's lecture. आपका कोई confusion था आप पहले वो बताइए. हाँ सर, पहला तो ये है, वो कंफ्यूजन नहीं है, मैं क्लियर करना चाहता हूँ सर. जो भी टोपोलॉजी होती है वो सिग्मा अलजेब्रा होती है. No, not. सिग्मा अलजेब्रा जनरेट भाई, No. हर कोई टोपोलॉजी. हाँ, हर टोपोलॉजी से हम सिग्मा अलजेब्रा को जनरेट कर सकते हैं, बट टोपोलॉजिकल स्पेस नीड नॉट बी सिग्मा अलजेब्रा. ठीक है सर, अगर वो नहीं है तो फिर हम कैसे उनको बोरल सेट्स बना सकते हैं, क्योंकि वो तो सिग्मा सेट्स का ही बना होता है ना सर. सिग्मा सेट, सिग्मा अलजेब्रा जनरेटेड बाय द टोपोलॉजी. हाँ, अब यह है कि जो भी कलेक्शन है ना सेट्स की, उससे हम सिग्मा अलजेब्रा को जनरेट कर सकते हैं. जो भी कलेक्शन होगी सेट्स की, एनी कलेक्शन ऑफ सेट्स, फ्रॉम एनी कलेक्शन ऑफ सेट्स वी कैन जनरेट सिग्मा अलजेब्रा. और ये जो टोपोलॉजी होती है ये भी कलेक्शन ऑफ सेट्स ही होती है. इससे भी हम सिग्मा अलजेब्रा, खुद ये सिग्मा अलजेब्रा नहीं है, इट्स नॉट अ सिग्मा अलजेब्रा, बट वी कैन जनरेट a sigma algebra with the help of from those open sets, from the family of these open sets, or you can say the topology. जो given topology होगी उससे हम सिग्मा अलजेब्रा को जनरेट कर सकते हैं. देखिए, अगर x है ना, if x is a non-empty set, if x is a non-empty set not equal to C, and F is a collection of subsets of X. Okay, collection of subsets of X, then this F need not be a sigma algebra. Okay, it's not a sigma algebra in general. कुछ केसेस में हो भी सकती है सिग्मा अलजेब्रा, बट इन जनरल because it's any collection of subsets of X. But we can find a sigma algebra S which contains F. We can find such sigma algebras. We can find a sigma algebra, this S is sigma algebra and it contains F. ऐसी सिग्मा अलजेब्राज हम निकाल सकते हैं. जैसे कि आपके पास ये एक सिग्मा अलजेब्रा जो F को कंटेन करे, वो क्या है? दैट्स पावर स्टफ X, है ना? पावर स्टफ X इज वन ऑफ द सिग्मा अलजेब्रा विच कंटेन्स F. ऐसी सारी सिग्मा अलजेब्राज हम निकालेंगे जो इस F को कंटेन करे, पर्टिकुलर F. पहले आप फिक्स कर रहे हो, अब हमें क्या चाहिए? अब हमें वो सिग्मा अलजेब्रा चाहिए, वो सिग्मा अलजेब्राज चाहिए जो इस F को कंटेन करे. उसके बाद हम क्या करेंगे? उसके बाद हम उन सारी सिग्मा अलजेब्राज का इंटरसेक्शन लेंगे. जितनी भी आ जाएगी, 10 आए, 20 आए या इन्फिनाइट आए, काउंटेबल, अनकाउंटेबल, जितनी भी सिग्मा अलजेब्राज आए जो इस F को कंटेन करे, उन सारे सिग्मा अलजेब्राज का हम क्या लेंगे? इंटरसेक्शन. एंड दैट इंटरसेक्शन इज द स्मॉलेस्ट सिग्मा अलजेब्रा कंटेनिंग F. और उसी सिग्मा अलजेब्रा को कहते हैं सिग्मा अलजेब्रा जनरेटेड बाय F. अब आप कह रहे हैं टोपोलॉजिकल स्पेस. अब X नॉन एम्प्टी सेट है और टाउ इस पर टोपोलॉजी है, सो टाउ इज आल्सो ए कलेक्शन ऑफ सबसेट्स ऑफ X. अब यहाँ पर हमारा जो F है वो टाउ है इस टोपोलॉजिकल स्पेस में, क्योंकि हम किसी भी क्लास से हम टोपोलॉजी को जनरेट कर सकते हैं, किसी भी क्लास ऑफ सेट से. इन पर्टिकुलर इस टोपोलॉजी से भी हम एक सिग्मा अलजेब्रा को जनरेट कर सकते हैं. वी कैन जनरेट अ सिग्मा अलजेब्रा विद द हेल्प ऑफ दिस टाउ. So what we do, we take all the sigma algebras containing tau. At least we have this power stuff X. Again, it's a sigma algebra and it contains tau because tau is also a collection of subsets of X, and P of X is a collection of all subsets of X. So this Px it contains tau. तो यहाँ पर जो है ना, ये इस केस में कोई भी टोपोलॉजी आपके पास नहीं. You don't have topology. You have simply a non-empty set. We have a collection of subsets. It's any collection of subsets of X. It may not be a topology here, but here we have a special case. We are taking this F to be a topology. We are taking it as tau. We take it as a tau. Tau is a topology in X, so it's not any general class. और general definition में क्या है? It's any general class. It's any class of subsets of X. अब
अब इस टाउ से जो सिग्मा अलजेब्रा जनरेट होगी, इस टाउ से जो सिग्मा अलजेब्रा एस जनरेट होगी है, S. What is S? S is the intersection of all sigma algebras containing tau. So S. What is S? S is the intersection of all sigma algebra. Okay. Containing tau. So it's actually the sigma algebra generated by tau. अब इस सिग्मा अलजेब्रा का पर्टिकुलर नाम है, इसको हम कहते हैं बोरल अलजेब्रा भी। तो इस केस में जो यहाँ पर जो आपने डिफाइन किया, यहाँ पर हमने इसका कोई पर्टिकुलर नाम नहीं दिया। इट्स ए सिंपली सिग्मा अलजेब्रा जनरेटेड बाय एफ। यहाँ पर भी ये सिग्मा अलजेब्रा है जनरेटेड बाय टाउ, बट इट हैज अ स्पेशल नेम दैट इट्स कॉल्ड ए बोरल अलजेब्रा। क्या कहते हैं इसको? बोरल अलजेब्रा। और इसके जो मेंबर्स हैं उनको हम बोरल सेट्स कहते हैं, नॉट फॉर दिस जनरल एफ। ओके, गॉट इट? हाँ सर, हाँ सर। तो बोरल अलजेब्रा में एफ होता है टाउ के बराबर। हाँ, योर एफ इज अ टाउ, टाउ इज अ टोपोलॉजी। यस, इट्स अ टोपोलॉजी। Okay, today we do some exercises. First exercise, so this exercise is at page number 97 and 98. Set of we have exercise set here. It's consisting of 13 exercises. Okay, आप कुछ इसमें देख लेना, कुछ exercise आप कर लेना इसमें, तो कुछ मैं यहाँ पर दिखा भी दूंगा। So first exercise जो इसकी है, exercise 1, it's if X is a topological space, so obviously we have a topology there. If X tau is a topological space, so whenever we have a topological space, that means we have open sets, we have closed sets, है ना? तो जो टाउ के मेंबर्स है वो ओपन सेट्स है, उनका जो कंप्लीमेंट है वो क्लोज्ड सेट्स है। So then this family, this S, which is consisting of these sets, it's a C intersection O such that C is a closed set. C क्लोज्ड सेट का मतलब क्या है? इसका जो कॉम्प्लीमेंट है वो टाउ में है। ओके, एंड O is an open set. Then show that this S is a subring. S is a subring. तो होगा इसमें। हाँ, obviously empty sets there, because how this empty sets there? क्योंकि सर अगर हमारे पास कोई भी ओपन सेट है उसका कंप्लीमेंट के साथ इंटरसेक्शन लेंगे तो वो ओपन होगा उसमें, तो उनका इंटरसेक्शन नहीं, मुझे एक्चुअली फाई इस टाइप का होना चाहिए, क्योंकि इसमें इस टाइप के मेंबर्स है, क्लोज्ड इंटरसेक्शन ओपन। तो you are taking you mean to say that we take any open set, we take its complement, then this intersection, because this is a closed set, because it contains the sets which are expressed as the intersection of closed and open set. जो भी सेट इस टाइप का होगा, इंटरसेक्शन ऑफ क्लोज्ड एंड ओपन, वो इस फैमिली में है, वो इस क्लास में है, इसका आपको ख्याल रखना है। So I have this, if O is an open set, then O complement is a closed set. So O complement intersection O, it's the intersection of closed and open set, so there is a member of S. So but then this is actually the empty set.
and you can also take the special keys here. X intersection X complement हम भी हम ले सकते हैं, not necessary. So let's take let O be an open set, then O complement is a closed set. Therefore the empty set, which is equal to O complement intersection O, it belongs to S. So that's property 1. Now a second property. We show that it's closed under finite intersection. So for this I take only two members. Let's take two members. Let A1, sorry, let's okay, it's fine. A1, A2 belongs to S. तो A1 क्या होगा फिर? A1 किस टाइप का सेट होगा? A1 will be some closed intersection with O. Open set. Okay, so A1 will be of the type of C1 intersection O1, where C1 is closed, O1 is open. Similarly, A2 is of the same type, so it will be equal to like this C2 intersection O2, where C2 is closed and आपको clear हो रहा है सारा? हाँ sir. Okay, so then A1 is equal to C1 intersection O1 and A2 is equal to C2 intersection O2, where C1 and C2 are closed sets and O1 and O2 are open sets. Now actually we want to find the intersection, and we need to show that this intersection is also the intersection of closed and open sets. That intersection is also the member of S actually. So now let's find the intersection. A1 intersection A2, it's equal to C1 intersection O1 intersection C2 intersection O2. So now it's equal to C1 intersection C2 intersection O1 intersection O2. So this is the closed set. C1 intersection C2 is a closed set, and O1 intersection O2. So it's equal to C intersection O, where C is closed and C O is is open. equal to C1 intersection C2 is closed, and O is equal to O1 intersection O2 is open. So therefore A1 intersection A2 belongs to S. Therefore A1 intersection A2 belongs to S. Yes. इसको आपने कॉपी किया सारा? हाँ sir. हाँ sir. Now we prove the last part. Third, A minus B is equal A to minus B. Okay. yes. So let this A1
A2 belongs to S, then A1 is equal to C1 intersection O1, and A2 is equal to C2 intersection O2, O2. where C1 comma C2 are closed sets and O1 O2 are open sets. Now let's find the difference. A1 minus A2, it's equal to C1 intersection C2. Okay, it's O1. It's O1 here. C1 intersection O1 minus C2 intersection O2. That's equal to C1 intersection O1, and we know that A1 minus A2 is equal to A1 intersection A2 complement, so it's here this intersection with the complement of this set. Okay, because for any two sets A and B, A minus B is equal to A intersection B complement. तो यहाँ पर दो सेट्स आपके पास ये है, C1 इंटरसेक्शन O1 एक सेट है और C2 इंटरसेक्शन O2 आपका दूसरा सेट है. This is equal to C1 intersection O1 intersection, this is a C2 complement union O2 complement. O2. Now we apply the distributive law intersection over this union. Okay, so treat this as a set single. It's like A intersection B union C. So this is your set A that you can treat as B union C. It's A intersection B union C. You can apply the distributive law here. So this is equal to C1 intersection O1 intersection C2 complement, then union C1 intersection O1 then intersection C2 complement. C2 complement. Now a union. Again we have this C1 intersection O1 intersection O2 complement. So here I want to express this as a intersection of closed and open set. Actually closed and open set. Okay, so let's write it as let's write it as okay, this is C1 intersection this is O1 intersection C2 complement, and this is the intersection of closed and open set. We have union O2 complements closed set, so I will write this as a C1 intersection O2 complement and intersection O1.
So thus we have expressed this difference as and you can see these two sets are the disjoint sets. हाँ सर C1 is closed and this is open. ये दो जो है, ये जो यूनियन है ना, क्या ये डिसजॉइंट यूनियन है? This is, if it is not, I still can express this as a disjoint union. That's not a problem. But you can see this first union, this first set C1 intersection O1 intersection C2 complement. This one, okay. It is the member of S because it is the intersection of closed and open set. But हाँ सर And second is also the member of S because it is also the intersection of closed and open set. So actually this is the union of members of S. ये यूनियन है S के मेंबर्स का, क्योंकि दोनों यूनियन में जो दो सेट्स आप ले रहे हो ना, both are the members of S. So it's actually equal to like this: F1 union F2, where F1 is the first set and F2 is the second set. Both are the members of where yes these F1 and F2, they are both members of S. yes But I want to see whether they are disjoint or not. Oh, that's very important. That is very important because I want to express this as a finite disjoint union. If I choose X here, so X is C1 and X is O1 and X is not in C2. X is not in C2, okay? X is not in C2. If X is not in C2, this should be these sets should be disjoint, but what is C1 and O1? Both are the members of S. Closed and open. Okay. Closed here. Just a minute. It is how do I express it as a disjoint union? Express F2 minus F1, then again we have problem. Again, it's a problem. Okay, if this is union in this, okay. Let me see the previous page first. It's A1 minus E2, that's equal to C1 intersection O1 intersection C2 intersection O2 complement, which is equal to C1 intersection O1 intersection C2 complement union O2 complement. O2 complement, okay. तो what I have done, मुझे थोड़ी सी चेंज इसमें करनी पड़ेगी. दिस इज यहाँ पर O2 कॉम्प्लीमेंट है, यहाँ पर C2 कॉम्प्लीमेंट है. O2 कॉम्प्लीमेंट C2 कॉम्प्लीमेंट, ओके. सो दिस मैंने C2 कॉम्प्लीमेंट को O1 के साथ लिया और O2 कॉम्प्लीमेंट को मैंने C1 के साथ लिया. Intersection. Okay,
Okay, so this is here C1 intersection, it is C2 complement is there. X is not in C2 complement, X is not in O2 complement. Why not? X is not in C2, X is not in O2. Is it true? It's neither in C2 nor in O2, but it is in C1, it is in O1. X belongs to C1 and X belongs to O1. अगर इस इंटरसेक्शन में कोई पॉइंट है, इसमें भी है इसमें भी है, तो वो पॉइंट C2 में नहीं होगा और वो पॉइंट ओबियसली O2 में नहीं होगा, फिर O2 में भी नहीं होगा, पॉइंट C2 में भी नहीं है, O2 में भी नहीं है. That point is in C1 and O1 but not in C2 intersection O2, that is either not in C2 or in O2. O2. X is not in O2 because X is in the intersection, so X is not in O2, X is not in C2. But X is not in the union. X is, so this is C2 A2, okay, C2 and A2. X is not in the intersection, X is not in the intersection, X may be O2. So in case C2 is equal to O2, C2 is equal to O2. सर अगर हम दिखाएंगे ना C2 intersection O2 is empty. Yes. C2 intersection they are disjoint. तो फिर ऐसा हो सकता है क्योंकि अगर जो यहाँ पे C1 में होगा वो यहाँ पे भी होगा, वहाँ पे जो O1 में होगा वो यहाँ पे भी होगा. तो हमें दिखाना है कि C2 intersection O2 is empty. They are actually disjoint. हाँ, अगर इनमें से एक्चुअली यहाँ पर क्या आ रहा है, अगर ये डिसजॉइंट नहीं है तो कोई पॉइंट ऐसा आ रहा है जो ना C2 में है ना O2 में है. There is a point which is neither in C2 nor in O2. There is a point which is neither in C2 nor in O2. So वो पॉइंट यहाँ पर होगा, बट दैट पॉइंट इज इन C1 as well as in O1. C1 O1 में है, C1 ये है, ये O1 है सपोज, इसमें है वो पॉइंट C1 में भी है O1 में भी है, ओके, मगर वो C2 में नहीं है और O2 में भी नहीं है. कुछ यहाँ पर कुछ दिक्कत हो रही है. आई हैव टू चेंज दिस यूनियन. ओके, मैं इसको मैं कल डिस्कस करूँगी इस एक्सरसाइज को अच्छी तरह से. ओके, अगर हम ये भी लिखें प्रोवाइड C2 intersection O2 is, फिर ऐसा कर सकते हैं. नहीं प्रोवाइड तो C2 intersection O2 is we cannot do that. तो ये जो डिफरेंस का पोर्शन है ना, ये मैं यहाँ तक आप ये याद रखिए, यहाँ तक हमने किया है, इसको आप देख लेना यहाँ तक. इसके बाद इसको कैसे डिसजॉइंट यूनियन में कन्वर्ट करें, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट है. Let's do it in the next lecture. Then we have one more exercise, exercise 2, which is let x
B equal to the semi-closed interval AB. X is this set. 1 minute. X is equal to 103. Okay. Okay, here X is equal to the interval 0 1, sorry, interval 0 1. And our S is here. S a collection of subsets of 0 1 that can be expressed as, and S is a collection of subsets of 0 1 that can be expressed as a finite union of the sets AB, which are subsets of the closed this interval 0 1. This is our S sets that can be expressed as a finite union of sets of the form, okay, of the form this semi-closed interval AB, which are subsets of this set. Okay, then this S, then show that S is an algebra, then show that sorry, I must erase this. Okay, this our exercise, let X be equal to the semi-closed interval 0 1 and S be a family of sets that can be expressed as the finite union of sets of the form semi-closed interval AB, but they are all subsets of the semi-closed interval 0 1. Then show that this S is an algebra. S is an algebra. Solution. So exercise, आपका जो x है ना वो 0 1 है, ये सारी इसी की सबसेट्स है. आपका जो S है, S इस टाइप का है. पहले हम S को एक्सप्रेस करें. व्हाट्स S एक्चुअली? It is the finite union of sets of this form, semi-closed interval AB. So it's like this actually. S is the sets of this form: A1, B1, union A2, B2, union AN, BN, such that
such that these intervals are all subsets of the interval semi-closed interval 0 1. यही है ना ऐसा आपका? हाँ सर. तो हमें प्रूव करना है this S is an algebra. S is an, so obviously empty set is there because whenever this A1 is greater than B1, A2 is greater or equal to B2, so on, if I choose so clearly you can say clearly this set which is a subset of this one, you can say what I should write here, it's 1 by 2 to say 1 by 4. Okay, this is of this form. Okay, so it's the empty set